शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर
खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. भगवान के साथी बनने के लिए आज की सभा में कौन आए हैं? In order to become God's companion, who has come into the gathering? भाई बहनें आ गए हैं। All the Rajasthan zone brothers and sisters have reached Madhuban आप सबका for Shivratri Bap Dada Milan. So Didi welcomes all the brothers and sisters who have reached Madhuban. बाबा हमारे साथी हैं, हम भी बाबा के साथी हैं। God is our companion and we are God's companion. शिवरात्रि का पावन पर्व नजदीक में है। सभी मिल करके बाबा की The eve of Shivratri, मूर्ति पावन शिव जयंती मनाएंगे। we are going to celebrate Shiv Jayanti. हम अपना भी अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे। We also celebrate our Alaukik birthday because Baba says Shiv Jayanti is also known as Gita Jayanti. Baba descends on the earth and gives us the knowledge. So that is the reason why we call it Gita Jayanti and also Brahma Jayanti, because even Brahma Baba's Alaukik birthday is celebrated and it is our Alaukik birthday too. हम सब मिल करके So we are going to celebrate. आज मुरली में बाबा ने कहा है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। In today's Bap Dada's Murli version, Baba says that this is Godfatherly University where we ordinary human beings become the deities. Baba says in order to become deities, you should have total faith. और निश्चय कर लिया है कि स्वयं बाबा आए हैं। हमें भक्ति का फल One should have total faith in Baba that Baba has come to give us the fruit of devotion. And through this true knowledge, we are going to become Narayan. तीसरा नेत्र खुलना, परख लेना और निश्चय कर लेना, ये बहुत जरूरी है। तभी Through this third eye, we should discern, we should judge and we should make decisions. 13 फरवरी 2023 Today is 13th February 2023. बाबा कहे मीठे बच्चे, Essence, sweet children, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। this Godfatherly World University मनुष्य से देवता is for changing from human beings into deities, बनने की। from an ordinary human into Narayan. जब ये पक्का निश्चय हो जाए, Only when you have this firm faith you will be able to study this study. पढ़ सको। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने की। निश्चय नहीं तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती। Baba says if you don't have firm faith, you won't be able to study this study. मनुष्य से
तुम बच्चे इस समय Question: what effort are you children making at this time in order to change from human beings into deities? कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है Answer: आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, that of making your eyes civil from criminal, साथ साथ मीठा बनने की। and of becoming sweet at the same time. सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल। In the golden age, everyone's eyes are civil. वहाँ ये मेहनत नहीं होती। You don't have to make this effort there. यहाँ पतित शरीर, Here, पतित in your दुनिया impure में bodies and the impure world, you children, तुम बच्चे you souls आत्मा are भाई brothers. भाई हो, ये निश्चय कर आँखों को With this सिविल faith, you are बनाने making का effort to make your eyes पुरुषार्थ civil. कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, Second question: भक्तों की किस एक बात से with which one aspect of the devotees की बात is the idea of omnipresent proven wrong? आज की मुरली के अनुसार उत्तर है Answer: कहते हैं हे बाबा, you said, Baba, जब आप when you come, आएंगे, I will surrender myself to you. तो क्या करेंगे हम? हम आप पर वारी जाएंगे। तो बाबा का आना Therefore, सिद्ध करता his है coming proves that he was not present at that time. कि वह यहाँ नहीं है। ओम शांति। Om Shanti. बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, The father asks, you spiritual children, आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? are you sitting here in the original religion of yourselves, souls? बेहद का बाप है You know that it is only the one unlimited Father who is called the Supreme the Supreme Spirit or the Supreme Soul. परमात्मा है भी जरूर, God definitely exists. पिता है ना? He is Supreme Father. परम पिता माना परमात्मा। The Supreme Father means ये बातें God. तुम बच्चे ही समझ सकते हो। Only you children are able to understand these things. यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। 5,000 years ago too, it was only all of you children who heard this knowledge. सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है। You know that a soul is very tiny and extremely subtle. It cannot be seen with these eyes. आत्मा को देखा होगा, There isn't a human being who would have seen a soul. देखने में आ सकते Yes, हैं it is possible to see one, दिव्य but दृष्टि only in a divine vision. और वो भी ड्रामा प्लेन And that अनुसार। too according to the drama plan. भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। On the path of devotion too,
They don't have the visions with their physical eyes. प्राण चले They गए, understand that the soul departed अनुभव होता है from the body. चैतन्यता निकल गई, People देखने की बात नहीं। believe, they feel that the soul has departed, but it is not the matter of, it is not the question of seeing the soul. जिससे चैतन्य में देखते हैं, दिव्य दृष्टि They receive a divine vision in which they see something as though in a living form. आत्मा Divine vision means to see in a living form. The soul receives the eye of the knowledge. तो दिव्य बुद्धि से समझ सकते हैं और कोई कोई दिव्य दृष्टि से Through divine vision we understand, and through divine vision we can see the soul also. बाबा ने समझाया है बहुत भक्ति The soul receives the eye of knowledge. The Father has explained, when someone performs a lot of devotion, it is called intense devotion. For instance, when Meera had visions, she used to dance. खुश हो जाती थी, The soul used to become so happy that she used to dance in a physical form. वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना, Paradise didn't exist at that time. It must be about 5 or 600 years since Meera existed. That which is the past is then seen in a divine vision. हनुमान गणेश आदि के चित्रों की It is as though people have become completely engrossed in worshipping the images of Hanuman and Ganesh, etc. A great deal. Although they have visions, they do not receive revelation through those. भावना है, The path to liberation लवलीन हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। Baba says that although they have visions, they do not receive liberation through those. The path to liberation and liberation in life is completely unique. ढेर मंदिर होते हैं, In Bharat, वहाँ शिव on the path of devotion, they have many temples. कोई छोटा बना They also keep Shivlingams there. Some make them small and others make them large. You now understand that just छोटे या बड़े पर समझ नहीं है, समझते हैं हम कि जैसे you now understand that just as you are souls, so he is the supreme soul. The size is the same. साइज एक ही है, अपने गुण कर्मों से परम या महान होते हैं, परंतु The size soul, तो हर एक the size of the soul is same. कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, They say that we all are brothers, भाई भाई, that all souls are brothers. बाप एक है, The unlimited Father is only one. All the rest are brothers, and they play their parts. सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते हैं, ये समझने की बातें हैं, These matters have to be understood. ज्ञान की बातें These are matters of knowledge, बाबा समझाते हैं, which only the Father explains. हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। Those to whom he explains can then explain to others. समझाते हैं, First of all, only the one incorporeal Father explains. कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ठीक कर भीतर People say of him that he is omnipresent राइट नहीं, and that he is in the pebbles and stones. तो राइट नहीं, That is not right.
Is it? एक तरफ कहते हैं कि बाबा जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, They say, Baba, when you come, I will surrender ऐसे myself to थोड़ी you. कहते हैं कि आप सर्वव्यापी, They don't say कहते you are हैं omnipresent. आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। They say, when you come, I will surrender myself to यहाँ you. नहीं है, Therefore, that means that he was not here. Was he? मेरे तो आप दूसरा न कोई, Mine is only one and none. को याद करना पड़े। So, you definitely have to remember him. Do you not? आएंगे, हम उनको पहचानेंगे, प्यार करेंगे और उन पर कुर्बान जाएंगे। ये बाबा ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको The Father sits here and explains to you children. This is called spiritual knowledge. के साथ जो रूहान है उसको रूहानी नॉलेज कहते हैं। When the Supreme Soul talks to the Supreme Children, this is known as spiritual knowledge. It is sung, souls remain separated from the Supreme Soul for a long time. काल से अलग कौन रहते हैं? The account of that has also been explained. कौन सी आत्माएं रहती? It is you souls who have remained separated for a long period of time. आत्माएं सबसे ज्यादा बाबा से अलग रहती हैं। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। You have now come to Father to study Raj Yoga. बड़े आदमी जब सही करते हैं, The Father is servant. Important people sign the letters beneath. Your obedient servant. तो बाबा सब बच्चों का सर्वेंट। The Father is the servant of all children. मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। He says, Children, I am your servant. कि भगवान आओ, You call out to him with so much right. पावन बनाओ। O God, come and make us impure ones pure. पावन होते ही है पावन दुनिया में। ये Only in the समझ pure में world do pure beings exist. बाकी These matters have to be understood. कन्न रस All the rest are just things to please the ears. सत्य ज्ञान की बातें, ये है ज्ञान की बातें। बाकी तो कथा कहानी These are all the कन्न true रस की बातें। knowledge. This is the true knowledge, and rest all are ये है just God things to please the Fatherly ears. World University। This is a Godfatherly university. क्या है? What is your aim हमारा and aim, objective? object क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। To change human beings बच्चों into को ये deities. निश्चय है कि हमको You ये children बनना have the है। faith that तभी you have to हम become रोज this. पढ़ाई करते हैं और अभ्यास में लाते हैं। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? Would those who don't have faith sit in school? और रोज स्कूल में आकर बैठना मीन्स पढ़ना। एम ऑब्जेक्ट Having taken admission and coming to school and study means you have faith. से सर्जन If they have faith, they would study with a barrister or a surgeon. का ही पता नहीं If they didn't even know about the aim and objective, they wouldn't go. घर से निकलेगा पर स्कूल में पहुंचेगा नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य You से children देवता understand that you are changing from human beings into deities, ये है सच्ची सच्ची सत्य from ordinary humans into Narayan. से नारायण
This is the true story of becoming true Narayan from an ordinary man. क्यों कहा जाता है? Why is it called a religious story? 5000 वर्ष Because पहले भी 5000 years ये ago knowledge too, you सीखी studied थी। this knowledge. तो पास्ट को कथा कह देते हैं। That which is in the past is called a story. सच्ची शिक्षा नर से नारायण बने। These are the true teachings to change from an ordinary human into Narayan. दुनिया में मनुष्य रहते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संधि काल में बाबा आते हैं। Baba descends on the earth in the Sangam, in the confluence age, when it is the end of the Kalyug and the beginning of the Satyug new golden age. जो दैवी गुण हैं वो मनुष्यों में नहीं। Deities reside in the new world, whereas human beings reside in the old world. बाबा ने क्या बताया आज? पवित्रता। Human beings don't have the divine virtues that deities have. भाई भाई की दृष्टि वृत्ति कृति, ये है देवताओं Human beings call those people deities and sing, "You are full of all virtues, 16 celestial degrees full, completely viceless," whereas they call themselves sinful, degraded ones who indulge in vice. When did the deities exist? It would surely be said that they existed in the golden age. It wouldn't be said that they existed in the iron age. Nowadays, because human beings have tamopradhan intellects, they even give themselves the father's titles. In fact, the one who makes you elevated is only the one Father, who is Shri Shri. The praise of the elevated deities is separate. It is now the Iron Age. Baba has also explained about sannyasis. One type of renunciation is limited and the other renunciation is unlimited. Those people say that they have renounced their homes and families and everything. However, nowadays look how they are sitting around as millionaires. Renunciation means to renounce that happiness. You children have unlimited renunciation because you understand that this old world is going to finish. It is not that you renunciate all your homes and worldly things. Baba says you renunciate from the whole world because now it is going to finish. This is why you have disinterest in it. Those people renounced their homes and families and then went back to the cities. They no longer live in caves on the mountains. Even when they do build their huts, they spend so much on them. In fact, huts don't incur any expenses. They build and live in big mansions. Nowadays, everyone is tamopradhan. It is now the Iron Age.
if the images of golden age deities didn't exist, all name and trace of heaven would have been disappeared. ये तो फिर भी यादगार चित्र रहे हुए The images which we have तुमको is समझाया जाता है as a sign अब मनुष्य से of remembrance. देवता बनना है आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं It is explained to you that you have to change from human beings into deities. देवता बनने का For half a cycle, there have been stories on the path of devotion. देवता बनना है तुमको समझाया जाता है While listening to those things, you have continued to come down the staircase. भक्ति मार्ग की Then, after 5,000 years, the same drama repeats accurately. करते आए हो फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा बाबा ने समझाया भी है कि Baba has explained ऐसे नहीं कहना to you है that you must not tell anyone to stop worshipping. ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे Once they have received this knowledge, they automatically stop doing that. समझ में आ जाता और निश्चय बुद्धि बन जाते तो अपने आप भक्ति छूट जाती और समझते हैं कि हम आत्मा हैं They understand that they are souls and that they have to claim their inheritance from the unlimited Father. पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए वह निश्चय हो गया First of all, there has to be the recognition of the unlimited Father. के मित्र संबंधियों से बुद्धि निकल जाती है When they have developed this faith, their intellects are removed from the limited fathers. बुद्धि का योग बाबा के Then, साथ while living at homes with their families, their intellects, yoga will be connected to the Father. शरीर निर्वाह अर्थ The Father Himself says, while acting for your livelihood, let there be remembrance of one Father in your intellects. देहधारियों की याद न रहे Let there not be any remembrance of bodily beings. नौकरी धंधा करो घर परिवार संभालो लेकिन बुद्धि बाबा के साथ वह होती है जिस Those are physical pilgrimages. तुम्हारी है This is your spiritual pilgrimage. इसमें धक्का खाना नहीं है You don't stumble around in this ज्ञान है लक्ष्य है because over here you have knowledge, you have aim and objective, की बात and you make efforts. भक्ति मार्ग है ही राह धक्का खाना पड़ता है अज्ञानता के कारण The path of devotion is the night where people have to stumble around. There is no question of stumbling around here. कोई बैठने की बात नहीं है ये तो No one has to sit down in order to remember God. तो बैठ के टाइम निकाल कर बाबा को विशेष याद करते हैं बाकी तो चलते फिरते भी बाबा को याद While walking around also we can remember the Father. में कृष्ण के भक्त On the चलते path of फिरते devotion, कृष्ण can the को devotees याद of नहीं Krishna कर सकते not हैं। remember Him while walking दिल में and तो moving उनकी around? याद रह जाती There is remembrance of Him एक in बार their जो hearts. चीज़ देखी Whatever जाती you है, have seen तो once, वो चीज़ याद the रहती remembrance है। of that remains. तो बाबा कहते हैं ये तो नेचुरल है मनुष्य का स्वभाव Baba says it is natural and nature to remember देखी जानी वो याद whatever we listen or तो talk तुम about. घर बैठे शिव बाबा को याद So, नहीं कर are you सकते। not able to remember Shiv Baba while sitting at home? कृष्ण This को is something याद new. करना To remember Krishna in something is something old. शिव बाबा को कोई जानता No one ही knows नहीं। Shiv Baba as far as his name and form
are concerned. निराकार को बुद्धि से जानकर याद करते हैं। ये नई बात है। सर्वव्यापी भी क्या है? What is कोई omnipresent? बताए ना? Someone तुम should बच्चे tell us, जानते हो, at least. हम You आत्मा children का know बाप that the Father of परम your पिता souls is Supreme परमात्मा Father, है। the Supreme Soul. आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। Souls cannot be called the हम Supreme सही Soul. बात जानते हैं कि आत्मा का बाप We know the true परम knowledge पिता that the परमात्मा Father of है। all the souls is the Supreme अंग्रेजी Soul. में आत्मा को सोल कहा जाता है। In English, Atma is called a soul. Not a single human being knows that the Father from beyond. वंडर है ना, हर कोई भगवान को मानते हैं पर एक Though भी everyone have भगवान faith को and जानता believe in नहीं। God, but then no one knows who वह the God बाप is. ही ज्ञान का सागर है। The Father is the ocean of knowledge. मनुष्य को देवता बनाया। He has the knowledge बाबा to change कहते human हैं, beings into रोज deities. रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। The Father says, I tell you deep things every day. याद ही The main thing is remembrance. याद ही भूल जाती है। It is this remembrance बाबा रोज that you कहते forget. हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद Baba करो। tells you every day, consider yourselves to be souls and remember the Father. कहते भी है, चमकता I, है this soul, अजब am a सितारा। point. It आत्मा is said शरीर that a से wonderful star निकलती sparkles है, in the center of the इन forehead. आँखों से देखने में नहीं When आती souls है। leave their bodies, they cannot be कहा seen जाता with है, these eyes. आत्मा निकल गई। But it is just said that the soul left the body and entered another body. तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते You souls अभी know अपवित्र how you बने have हैं। taken rebirth and become पहले impure. तुम आत्मा पवित्र थी You souls तो were pure तुम्हारा at first, गृहस्थ धर्म and you had a pure whole household religion. अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। Now both have जब become दोनों impure. पवित्र हैं, आत्मा और When शरीर both were दोनों pure, पवित्र both हैं, soul and the body, when both were उनकी pure, पूजा they were करते हैं। worshipped. अभी आप पवित्र हो, You are pure and we are impure. अपवित्र है, ऐसी भक्ति में प्रार्थना करते हैं। There both are pure, whereas here both are impure. और खुद के लिए कहेंगे हम So पापी it is that they were pure and they became वह impure. दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। वहाँ लक्ष्मी नारायण पति In the पत्नी golden सब age, देवी देवता everyone पवित्र, are pure, यहाँ and over सब here everyone are impure. अपवित्र बन गए। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही There both are जन्म pure, लिया? whereas here both are impure. बाबा So it is that they were pure and then become impure, or they were born impure. The Father sits here and explains. At first, you souls were pure and worthy of worship. Then, you yourselves became impure worshipper. जन्म लिए हैं। You have taken 84 births. सारे वर्ल्ड की You know the history, history and geography of the whole world. कौन-कौन Who used to राज्य rule करते there थे, and how they कैसे received राज्य the kingdom. मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो। You know और this कोई history. नहीं जानता। No one else knows it. तुम भी अभी जानते हो, You आगे know नहीं it now. जानते थे। Previously, you didn't know आगे it. तो, सत्य ज्ञान नहीं जानते थे, तो बाबा कहते हैं आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थी।
When you didn't have true knowledge, you had stone intellects. You didn't have the knowledge of Creator or the beginning and the middle and the end of the creation. You were atheists. You have now become theists. And so you become happy. Now you don't have to stumble and wander around everywhere. Now we are living a very elevated life. You have now become, you have come here to become deities. At this time, you have to become very sweet. You are children of the one Father, brothers and sisters. There cannot be criminal vision for anyone. You have to make effort at this time. The eyes are the most criminal of all. They are criminal for half a cycle and civil for half a cycle. In the golden age, the eyes of deities are civil. Here, eyes are criminal. People sit and relate the story of Surdas, a mind who blinded himself. He had love for God, so he blinded himself so that his eyes don't wander here and there and see here and there. The Father says, I have to come into the impure world and into an impure body. Those who have become impure have to be purified. You know that both Radhe and Krishna came from separate kingdoms. They were a prince and princess. After their marriage, they became Lakshmi and Narayan. And so, the dynasty is remembered. That age also becomes at that time. They say that the duration of golden age is hundreds of thousands of years. The Father says it is 1250 years. And so there is difference of day and night. The night of Brahma is for half a cycle, and then the day of Brahma is for half a cycle. There is happiness from knowledge and sorrow from devotion. The Father sits here and explains all of these things. He then also says, Baba says, sweet children, consider yourselves to be souls. Stabilize in your original religion. Remember the Father. He alone is the purifier. By remembering Him, you will become pure. Your final thoughts will lead you to the destination. The Father is the creator of heaven. So, He reminds you that you were the masters of heaven. You are now impure
and this is why you are not worthy of going there. मुझे Therefore, ही you बार have to आना become पड़ता pure. है। I एक only गॉड have to है, come once. एक There ही is just दुनिया one God, है। one world. हाँ, बस एक ही दुनिया है पृथ्वी पर, बाकी और कहीं और कोई There is ग्रह just पर only दुनिया one नहीं। world on this earth. मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। Human beings यहाँ have है innumerable ही एक opinions, मत, innumerable stories. अद्वैत मत, There are as many वो stories है as their tongues श्रीमत। are. झाड़ में देखो Here, कितने there मन is just the मतांतर one है, direction, झाड़ the कितना undivided direction. बड़ा हो गया है। Look how many ideas there are वहाँ in the एक pictures मन of the एक tree. राज्य था। The तुम tree has जानते become हो so हम ही large. विश्व There, के there मालिक used to थे। be one भारत direction कितना and one साहूकार kingdom. था। You know अकाले that you were the मृत्यु masters कभी of the होता world. नहीं था। Bharat और used to be यहाँ so तो wealthy. देखो बैठे There बैठे never used to be the ये untimely गया। death there. बैठे Here, बैठे a person शरीर dies छोड़ while देते just हैं। sitting doing nothing. चारों तरफ से मौत है। There is death in वहाँ every तुम्हारी direction. आयु बड़ी थी। There, your अभी तुम lifespans were very ईश्वर long. से योग लगाए You now मनुष्य have से yoga with देवता God बन रहे and हो, are तो changing from तुम human beings ठहरे into deities. योग योगेश्वरी। So, you are Yogeshwar and फिर Yogeshwari बनेंगे and will then become princess, राजेश्वरी। prince and अभी princesses. हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। You are now goddesses of योगेश्वरी। knowledge. फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो उन्हों को राजयोग Then, how did you किसने become सिखाया? princess and princesses? ईश्वर ने। God made you into वहाँ those. उन्हों की You now 21 know पीढ़ी who राजाई taught them चलती Raj है। Yoga. God. वह तो एक There, जन्म में their दान kingdom पुण्य continues for करने से 21 राजा generations. बनते हैं। Those मर people गया become तो king for खलास। just one birth by donating and अकाले performing मृत्यु तो charity. सबकी When आती they die, रहती है। everything ends. इस दुनिया Everyone में तो दान continues पुण्य to have करेंगे तो untimely राजा death. बनेंगे, पर अकाले मृत्यु भी इस दुनिया में होती है तो खत्म हो जाते हैं। सतयुग में ये लॉ नहीं है। वहाँ अकाले मृत्यु हो That is ऐसा not the law in the नहीं golden हो age where you have वहाँ untimely ऐसे death. नहीं कहेंगे कि काल There, खाए। you will not say that death came. एक खाल You shed छोड़ one skin दूसरी and take ले another. लेते हैं। जैसे Just सर्प as a खाल snake changes बदलते हैं, its skin. वहाँ ऐसे ही एक There, खाल there is छोड़ nothing. दूसरी लेंगे। वहाँ There is सदैव nothing खुशी but ही happiness and खुशी more रहती happiness. है। जरा भी दुख There is की no question बात of the नहीं। slightest sorrow. तुम सुखधाम का You are now मालिक making बनने effort to के become the लिए masters of the land of अभी happiness. पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा Acha, मीठे to the मीठे sweetest, beloved, सिकी long रहे lost and for बच्चों now found प्रति children, माँ lum, पिता remembrance बाप and good दादा morning from the का mother, याद the father प्यार Bap और Dada. गुड The मॉर्निंग spiritual father says रूहानी Namaste बाप की to the spiritual रूहानी children, बच्चों को नमस्ते। and we spiritual children हम says रूहानी Namaste बच्चों to the की spiritual father. रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का मुख्य सार धारणा के लिए पहली Essence for कॉल, dharana. इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। Have unlimited renunciation of this old world. शरीर निर्वाह अर्थ
while acting for the livelihood of your body, कर्म करते stay on the spiritual pilgrimage. रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट, Second point, पुरुषार्थ कर make effort and definitely make your eyes civil. है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख Keep your aim and objective in your intellect and become very, very sweet. प्यारे बाप दादा का आज का वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई Blessing. जमा करने वाले, May you be a sensible and a jnani soul who accumulates an income of multi-millions at every step. जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है। Explanation: a sensible and jnani soul is one who thinks before he acts. जैसे बड़े आदमी पहले Important people first have their food checked before they eat it. तो ये संकल्प Similarly, thoughts are food for the intellect, and so first check them and then put them into practice. संकल्प को चेक कर लेने से By first checking your thoughts, your words and actions will be automatically be powerful. जाएंगे और जहाँ Where there is power, there is an income. तो समर्थ बन, So, become powerful and accumulate an income of multi-millions बोल at every step. में That is, in your thoughts, words and actions. यही ज्ञानी तू These are the characteristics of a jnani soul. स्लोगन, Slogan: बाप और सर्व की दुआओं those who fly in the plane of the fathers and everyone's blessings are flying yogis. योगी हैं, उड़ता योगी हैं। आज का अव्यक्त इशारा, Avyakt signals: परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए अब समय प्रमाण व बाप in order to bring about God's revelation, विश्व के आगे स्वयं make yourself the practical proof बनाओ। in front of the world according to the time and according to the Father's study. तो अनुभव करें Anyone who sees you should experience that it is the Almighty Authority, Father Himself, who is teaching you and making you what you are. This practical proof is easy and clear method to reveal the Father. साधन है। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। आज शाम को 5 से 6 डायमंड हॉल में योग Today's schedule 5 to 6 this meditation. लोचन भाई जी का क्लास 6 to 7 Ram Lochan Bhaiji will conduct a class, पावरफुल अमृत लीला and the topic is Powerful Amrit Vela and Mansa Yoga. सभी सेवाधारी भाई बहनें डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। All the Sevadari of Diamond Hall have to assemble in Diamond Hall at 9 a.m. तपोवन में झंडारोहण का कार्यक्रम है। Today there's a
program of flag hoist in Tapovan आनंद सरोवर at 12 p.m. शिव मणि PM पार्क नर्सिंग कॉलेज मानसरोवर के सभी भाई बहने आमंत्रित हैं। All the brothers and sisters are invited. के लिए विशेष सूचना नाड़ी वैद्य डॉक्टर रंजीत सिंह जी सभी समर्पित और ट्रायल वाले भाइयों और बहनों को All the Samarpit and trial brothers and sisters में सुबह 10 से 12:30 बजे तक मिलेंगे। ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 सुबह 10 से 12:30 बजे तक। a doctor will meet from 10 to 12:30. वैद्य जी बीके कॉलोनी वाले भाई बहनों से वैद्य जी राजयोगी कॉलोनी में सुबह 9 से 10 के बीच मिलेंगे। तो कोई For भी BK कॉलोनी colony, वाले या पार्टी में आए हुए the doctor would be available in Rajyogi Bhavan. वहाँ So it is requested for the BK colony brothers and sisters not to attend in the training center. जानकारी के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट के पंकज भाई जी से संपर्क करें। सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी
देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। देवता होंगे लोग।